Hello everyone, welcome to Real Academy. Myself Vinit Mohite, the faculty for biology, and we'll be studying one chapter from standard 9 ICSC, that is health and diseases. Apart from all the various diseases which are discussed in our chapter, we'll be talking about one such disease which is called as cancer, the untreatable disease. Now why it is called as untreatable? Because cancer can never be treated. Okay, many of the people today are suffering from cancer, either first stage, second stage, third stage or fourth stage, and we all know whenever cancer reaches fourth stage, it is actually incurable. It will take your life. Okay, so what is cancer and what are the actual classifications of cancer we'll be looking here. So firstly, abnormal division of cells or else rapid division of cells. So division of cells means what? From one cell you are getting two cells. This is a natural phenomenon which occurs inside human body, because of which our height is increasing. But all of that, your height increase or else your organ increase, आपका organ जैसे का for example lungs, वो size में छोटा रहेगा जब आप बच्चे रहते हो, लेकिन जैसे वो आप size में बढ़ने वाले हो, आपका lungs भी size में बढ़ने वाला है. So सब organs का size बढ़ रहा है, but every organ size increase is actually under the control of your brain. What happens in cancer is, किसी ऑर्गन को अगर कैंसर होता है, फॉर एग्जांपल स्किन को, तो अभी स्किन का ग्रोथ मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता. स्किन खुद ब खुद ग्रो होना स्टार्ट होता है और उसके साथ साथ स्किन में अलग अलग ब्लड वेसल्स भी ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. स्किन खुद ब खुद कंट्रोल करना स्टार्ट करता है खुद को. सो दैट इज कॉल्ड एज कैंसर. तो उसको हम लोग कैंसर बोलेंगे कि आपका स्किन का नॉर्मल फिजियोलॉजी, जो भी नॉर्मल शेप है, वो कंप्लीटली बिगड़ जाता है. वहां पे एक रेड कलर का मास आएगा, जिस मास को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर. ओके, जब भी हम लोग कैंसर की बात करेंगे, हमारे पास वर्ल्ड में टू टाइप्स ऑफ कैंसर है. फर्स्ट इज बिनाइन कैंसर और इज बिनाइन ट्यूमर. सेकेंड इज मैलिग्नेंट कैंसर और इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बिनाइन ट्यूमर, इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्यूमर. एक छोटा सा नोड्यूल आपके स्किन के ऊपर आएगा या फिर आपके कोई भी अलग ऑर्गन के पास आएगा. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल लंग्स. तो आपके लंग्स के ऊपर एक छोटा सा नोड्यूल आने वाला है, जिसको हम लोग मराठी में गांठ या फिर हिंदी में गांठ बोलते हैं. तो वो आपके लंग्स के ऊपर आने के बाद वो वैसे का वैसे वही साइज में रहेगा. इट विल बी कॉल्ड एज benign tumor, like the one which Yuvraj Singh had. It was a benign tumor into his brain. It never increased in size, so it can be cut, and therefore Yuvraj Singh was saved of cancer. Second one is called as malignant cancer. Now malignant cancer is something which will never stop. It will spread throughout the body. Like if my skin has a nodule here, it will spread throughout the body and will give rise to a malignant cancer. And malignant cancer never has cure. तो अगर हम लोग एबनॉर्मल डिविजन्स के बारे में बोलेंगे, तो आपके सेल में एबनॉर्मल डिवीजन होता क्यों है? तो अगर हम लोग बात करेंगे, सो इफ वी हैव अ सेल, विद इन आवर सेल देयर इज अ न्यूक्लियस, एंड विद इन द न्यूक्लियस वी हैव आवर डीएनए मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ड्यू टू सन रेज, any rays like UV rays, sun has UV rays. Whenever UV rays come inside, they will bound to your DNA and they will break your DNA. Once your DNA breaks, your cell will either die or else your cell will turn into a cancer. So which means what? Cancer is not given to you by any bacteria, any virus or any fungus. It is given to you by your own DNA. If it breaks, you will have a problem, that is cancer. Okay, so either your cell will die or else it will produce a cancer. So all of the cells within the human body produce the cancer by the same way, except three cells. First is RBC, second is your brain cells, and third is your muscle cells. All these three cells will never get cancer. बाकी जो भी बॉडी में सेल्स है, भले वो पैनक्रियास के, स्टमक के, इंटेस्टाइन के, फिर कोई भी ऑर्गन के सेल्स रहने दो, आपके सब के सब सेल्स को हमेशा कैंसर होने वाले. और इनमें से सबसे डेंजरस है बोन कैंसर. क्योंकि बोन कैंसर क्यों डेंजरस है? बिकॉज आपके बाकी के जो भी कैंसर्स है, ऑल दोज कैंसर्स कुड बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन. बोन कैंसर कैन नेवर बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन. बोन कैंसर के लिए आपको सर्जरी ही करनी पड़ती है. यू हैव टू कट योर बोन और एल्स यू हैव टू रिमूव द कंप्लीट बोन फ्रॉम द बॉडी. ओके, तो उसके लिए हम लोग को हमेशा सर्जरी ही करनी पड़ेगी. कैंसर्स होते क्यों है? तो आपके पास जो भी हम लोग ने अभी बोला, यूवी रेडिएशन या फिर कोई भी रेडिएशन अगर आपके बॉडी के ऊपर आएंगे, यू मे गेट कैंसर. सिमिलरली टोबैको. तो टोबैको में एक हमारा कंपाउंड होता है हमारे टोबैको में, दैट इज कॉल्ड एज निकोटिन. निकोटिन ये कंपाउंड जब भी आपके सेल्स के अंदर जाएगा, इवन निकोटिन हैज द एबिलिटी टू ब्रेक योर डीएनए. Once the DNA is broken down, similarly remember, either the cell will die or else the cell will produce a cancer. Smoking, the same thing, and contains nicotine. Fried foods, pollution, the gases which are entering inside your body from the pollution, it's not oxygen, it's something else.
all those gases are again capable of breaking your DNA and therefore giving you cancer. Viruses, like for example, if we talk about this virus which is called as HIV virus, capable of giving you cancer. Second virus which is called as human papilloma virus, okay, the virus which mostly affects females rather than males, human papilloma virus. This virus is again capable of giving you cancer because it can go inside your cell, inside your DNA. वायरसेस हमेशा आपके डीएनए के पास ही जाएंगे और वो लोग का अगर डीएनए हमारे डीएनए के अंदर आता है तो our DNA will again become cancerous and our cell will become cancerous. But the most importantly, fried foods are capable of giving you cancer. The fried oil, जो भी oil हम लोग खाते हैं वो oil अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा so it can give you cancer. अपार्ट फ्रॉम दैट इवन रिमेंबर कि आपका जो हम लोग जो ब्रेड्स खाते हैं, इंडियन ब्रेड्स लाइक चपाती या फिर भाकरी, ये जो ब्रेड्स रहते हैं ये ब्रेड्स भी आपको कैंसर देने के लायक है. क्यों? क्योंकि जब भी आप लोग चपाती को बनाओगे, यू नो दैट ब्लैक कलर डॉट्स ऑन द चपाती व्हेनेवर इट इज कुक्ड हाईली, ओके, अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर कुक हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर ब्लैक कलर के डॉट्स आते हैं. दोज डॉट्स इफ यू आर ईटिंग और इट्स द सेम डॉट्स ऑन भाकरी, इफ यू आर ईटिंग दोज, you are actually disposing your body to cancer because all those chemicals will eventually go inside your cells and they have the ability to break your DNA. So everything in this world, basically the chemicals which will react with your DNA are capable of giving you cancer. Similarly, if we talk about an image of here, which you can see over the skin, there is a red colored lump. Okay, this lump can be either benign, which means it will not grow in size, or else it will be malignant, which means it will continue to grow and spread to other body parts. और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे स्प्रेड होने के बाद हम लोग उसको malignant cancer बोलेंगे. Okay, so many of the people are suffering from malignant cancer today because we know that benign tumor is nothing, it can be removed from the body, but malignant tumor is something which is dangerous. Whenever we have the cancer, जो एलिमेंट आपके बॉडी के अंदर आके आपको कैंसर दे रहा है उस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे कार्सिनोजन. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग निकोटिन की बात करेंगे जो टोबैको में मिलता है तो वो एक कार्सिनोजन है. निकोटिन इज अ कार्सिनोजन because nicotine has the ability to bind to your DNA and break your DNA. Okay, so similarly, whenever we talk about medicines to the cancer, these are all the medicines which can be used for cancer. First one is chemotherapy. What do you mean by chemo? केमो ये वर्ड का मतलब रहता है केमिकल्स. आप लोग केमिकल्स यूज कर रहे हो कैंसर को ट्रीट करने के लिए. यू कैन सी थ्रू द वेन मीन्स अ ब्लड वेसल इनसाइड योर हैंड, ही इज गिविंग सम मेडिसिन, डॉक्टर इज गिविंग सम मेडिसिन टू द पेशेंट. वंस दैट मेडिसिन goes inside the body of the patient, that medicines will kill all the cancer cells. बट वो सिर्फ कैंसर सेल्स को नहीं मारेगा, वो पेशेंट के बाकी हेल्दी सेल्स को भी मारने वाला है. बिकॉज इवन हेल्दी सेल्स हैव डीएनए, बराबर, आपके हेल्दी सेल्स भी ग्रो होते हैं, जिसके वजह से कीमोथेरेपी लेने के बाद उन पेशेंट्स में साइड इफेक्ट्स दिखते हैं. और फर्स्ट साइड इफेक्ट इज लॉस ऑफ हेयर्स. ओके, तो हेयर सब निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपके हेयर के जो सेल्स है वो ग्रोइंग है, वो आज भी ग्रो हो रहे हैं. ओके, वो हमेशा ग्रो होते रहते हैं. अगर आपको कीमोथेरेपी से मेडिसिन मिल रहा है तो वो ग्रोइंग सेल्स मर जाएंगे. आपकी स्किन हमेशा ग्रो होती है, आपकी स्किन भी मर सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन. ओके, तो ये सब मेडिसिन आपके बॉडी के लिए बेसिकली डेंजरस है. टू प्रिवेंट हेयर लॉस बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, टू प्रिवेंट दैट व्हाट यू कैन डू इज डॉक्टर सजेस्ट एन आइस पैक. एक आइस का पैक रहता है जो आप लोग आपके सर के ऊपर रख सकते हो. सर के ऊपर रखने के बाद आपको आपके ब्लड वेसल्स जो है आपके सर के अंदर वो सब छोटे हो जाते हैं. एक बार वो छोटे हो गए तो ये केमिकल आपके ब्लड से सर तक नहीं जा सकता एंड देयरफॉर दिस हेयर लॉस कैन बी प्रिवेंटेड. दैट्स द फर्स्ट थिंग, दैट इज कीमोथेरेपी. लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज रेडियोथेरेपी. रेडियो मींस रेडिएशंस. आपके बॉडी के ऊपर रेडिएशंस दिए जाएंगे विच आर कॉल्ड एज एक्स रेज. ओके, एक्स रेज आपके बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली दिए जाते हैं जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर के कैंसर सेल्स मर जाएंगे. Similar to this, even X-rays have the ability of killing normal cells too. तो अगर normal cells X-rays की वजह से मर रहे हैं, similarly इनमें जो साइड इफेक्ट्स दिखेंगे वो साइड इफेक्ट्स आपको रेडियोथेरेपी में भी दिखने वाले. Do you know about the first chemical which was used against cancer? So that first chemical was mustard powder, जो हम लोग के घर पे मिलता है. We cook food from mustard powder. So वो mustard powder सबसे पहला कैंसर के ऊपर एजेंट था जो ब्रिटिश ने इन्वॉल्व किया था, जो ब्रिटिश ने सबसे पहले ढूंढा था ओवर आर्मी. ब्रिटिश की जो आर्मी थी, जो आर्मी कैंसर से फेस कर रही थी, उनके लिए वो सबसे पहले ढूंढा गया था. Well, let us talk about the last thing which is laparoscopy. Laparoscopy means what? See, you can see all the images inside the body just because of a machine called laparoscope. You can see the rod which is being inserted inside the patient's body. वो rod के आगे कैमरा रहता है, जो कैमरा
स्क्रीन में दिखा सकता है कि कैंसर कहाँ पे है। एक बार आपको कैंसर दिखा तो कैंसर वहां से कट किया जा सकता है एंड देन दैट कैंसर कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. Once that cancer is removed out of the body, the patient will be again, the skin will be again stitched and the patient will be sent home. In this way, laparoscopy is the third option. I mean the last option. Surgery is the last option whenever we talk about cancer. So ये 3 operations आपके पास रहते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए. That is chemotherapy, not surgical, radiotherapy again not surgical, while this will be surgical because your body will be cut. Okay, apart from all this, the brain cancer, मतलब ब्रेन को एक्चुअली कैंसर नहीं होता, लेकिन ब्रेन के नीचे में जो एरियाज है उनको कैंसर होता है. वो एरियाज को कैंसर होने के बाद बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कट योर ब्रेन. बट हाउ टू कट योर ब्रेन, आई मीन हाउ टू विजुअलाइज द ब्रेन, यू हैव टू कट दिस इज अ बोन. बोन को कैसे कट करेंगे डॉक्टर्स हैव टू यूज अ ड्रिल मशीन. जो ड्रिल मशीन से वो लोग आपका बोन कट करने वाला, और बोन को कट करने के बाद दे कैन सी योर ब्रेन. Otherwise they don't have any access to the brain. Like if I'm having a lung cancer or liver cancer, तो liver cancer के टाइम पे मैं अपना स्किन आराम से कट कर सकता हूँ, बट ब्रेन कैंसर के लिए हम लोग को स्कैल्पेल नहीं बट ड्रिल मशीन यूज करना पड़ता है. So these 3 are the basic treatments towards cancer. So thank you for attending this session.